Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 8. Here this is your computer book. Let's click a trendy way to learn computers. So children, today we are going to do chapter 5 of your book and it is, the name of the chapter is Working with Links, Frames and Images in HTML5. So we have already learned about HTML in our previous classes. Today we are going to learn some more things in it. Learning HTML gives aspiring coders the power to create their own websites. So as we already know that through HTML we can create our own websites, and since it's fun and easy to learn, kids of all ages can quickly dive into it. सो बहुत इजी होता है लर्न करने के लिए, तो कोई भी इसे इजीली कर सकता है. चिल्ड्रन, लेट्स लर्न हाउ टू क्रिएट लिंक इन HTML. हमने तो वेब पेज बनाना सीख लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ कैन वी क्रिएट लिंक. आपने देखा होगा जब भी आप कोई वेब पेज खोलते हो तो उसमें सिंपल लिंक्स होते हैं. जैसे आपने लिंक पे क्लिक किया, एक नया वेब पेज खुल जाता है उससे लिंक से रिलेटेड. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू क्रिएट link in HTML. Linking the HTML, CSS and links, images as links, types of linking in HTML, links as buttons, frames in HTML5, anchor, a tag, inserting images and creating frames. So children, we are going to start with the first topic of this chapter, and the first topic is linking in HTML. While surfing the internet, you might have seen that when we click on any highlighted word or image, it takes us to another web page or document. अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हम कोई वेब पेज खोलते हैं, उसमें कोई लिंक है, उस पर हमने जैसे क्लिक किया एक अलग वेब पेज खुल के हमारे सामने आ जाता है. These links are to other pages are called hyperlinks. So in links, ये links जो हमें दूसरे पेज पे ले आते हैं, इन्हें हम hyperlink के नाम से जानते हैं. A hyperlink is a highlighted text or image that stores the address of some web pages. So कुछ वेब पेजेस का ये एड्रेस को स्टोर करके अपने पेज पे रखते हैं. और डॉक्यूमेंट, when we click any hyperlink, the link document opens. तो जैसे हम किसी hyperlink पे क्लिक करते हैं, जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाता है. Types of linking in HTML. कौन कौन से HTML linkings हैं? Let's see. There are two types of linking in HTML and they are external link and internal link. First is external linking. External linking involves connecting two different web pages. दो अलग-अलग web pages को connect करना. When you click a hyperlink, a new web page to which the hyperlink is linked gets displayed. So जैसे हम किसी hyperlink पे click करते हैं तो वो एक अलग पेज को ले जाता है जो उस पेज से already connected. You can link pages within the same directory or any other page over the internet. तो हम भी ऐसे ही कर सकते हैं within the same directory, उसी same directory में या फिर other किसी पेज में in the over the internet. Next is internal linking. Internal linking involves linking various sections of the same web page. So internal linking क्या होता है? इन्वॉल्व, ये इसका मतलब है बहुत सारे सेक्शंस को एक साथ लिंक करना एक ही वेब पेज में. दिस टाइप ऑफ लिंकिंग इज यूजफुल व्हेन अ वेब पेज इज वेरी लॉन्ग. इस टाइप की जो लिंकिंग है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है व्हेन अ वेब पेज इज वेरी लॉन्ग. जब एक वेब पेज बहुत ज्यादा लंबा होता है तो इस तरीके की लिंकिंग उसमें होती है. इट लेट्स द यूजर व्यू द डिजायर्ड सेक्शन ऑफ द पेज क्विकली. सो इससे क्या होता है, यूजर जो है बहुत जल्दी ही उस डिजायर्ड पार्ट को देख पाता है. इंटरनल लिंकिंग सर्व्स एज अ बुकमार्क टू गो टू अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द वेब पेज. इंटरनल लिंकिंग इज अ टू स्टेप प्रोसेस. सो इंटरनल लिंकिंग क्या करता है, ये एक बुकमार्क का काम करता है टू गो टू अ पर्टिकुलर सेगमेंट. एक किसी पर्टिकुलर पार्ट में जाने के लिए बुकमार्क का काम करता है. And internal linking is two-step process. ये एक दो स्टेप का प्रोसेस है. Now let's see what is anchor tag. Anchor tag क्या है?
Anchor tag is used to create hyperlinks in the web pages. So hyperlink create करने के लिए we should know what is anchor tag. So anchor tag use होता है for creating hyperlinks. It is a container tag. ये एक container tag है. Any tag or image enclosed with a or closing tag a is displayed as a hyperlink. So क्योंकि ये container tag है तो इसमें एक opening और एक closing tag हमें चाहिए. href attributes of a tag. A tag के क्या attributes है? Let's see. This attribute includes the destination of the link. It defines the document to which the link leads. ये define करता है उस document को जिसमें ये link है. Now the syntax here is a href. This is to be written here. Then the value is given. Click here and then closing tag is given. Where value means absolute URL. It points to another website. Means यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है इसका मतलब है कि किसी और वेबसाइट की बात कर रहा है, अनदर वेबसाइट की बात कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल हियर एग्जाम्पल इज गिवन www.yahoo.com. A relative URL it points to a file within a website. So ये क्या करता है URL? ये फाइल को पॉइंट आउट करता है किसी भी वेबसाइट में. फॉर एग्जाम्पल here we can see the example is given. Now link to an email address. email address का link यहाँ पे कैसे आएगा? So here we can see the example is given. We have to type this and the opening phrase is here. Then href is equal to and the email address and then we have closed it. Type the following code in HTML and save the file with the name os.html. So हमें ये फाइल जो है टाइप करनी है HTML में in our notepad and from there we have to write down it as इसका नाम लिखना है हमें os.html. OS means operating system. So as we already know, as we have worked here, these are the starting things. HTML first we have to write, then heading, then title, then creating hyperlinks, then we have closing title. Next here we can see creating hyperlinks is given here. Then style is here, CSS is applied here, body is given. Then we have applied different types of alignments and text shadow and we have done all these things here. Then we have closed it and then we have to close the heading, then body, and this is given here. Body starts from your operating system. This was the heading, so H1 is used here. H1 is the font size written here. Next we have typed all these things that was typed there. So we have to type all this in our notepad. And the result that we saw in the previous page, जो हमने result देखा था इधर right side की screen में, that will appear there. Now type the following code in HTML and save the file with the name link.html. अब हमें ये क्लिक करना है, क्लिक हियर पे ये बनाना है हमें. So as you click on this link, the OS HTML file will appear. So जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उस OS HTML फाइल जो भी हमने बनाई थी वो वाली फाइल हमारे सामने आ जाएगी. तो अब हमें ये सारी डिटेल्स जो दी गई है यहाँ पे ये हमें टाइप करनी है and then the result will be seen. Next comes the CSS and links. CSS affects the links differently depending on the state they are in. So CSS जो हर link को different तरीके से affect करता है. We can divide links state in 4 categories. Links को हम 4 category में divide कर सकते हैं and they are a link, a visited, a hover and a active. Let's see what are these. A link is a normal and unvisited link. ये एक normal link है या फिर एक unvisited link जिस पर अभी तक कोई नहीं गया है. A visited is a link user has visited. ये link ऐसी है जिसमें user जा चुका है. Hover, a link which the user moves to the mouse over it. So ये एक ऐसा link है जिसमें user बार बार अपना mouse move करता है. And active is a link that the movement
the link the moment it is clicked. So ये एक ऐसा लिंक है जिसपे उसी मोमेंट पे वो रहता है जिसको क्लिक किया गया है. We can customize these link states by applying different types of properties and colors to them. So इसमें अलग अलग types की properties और colors को हम add कर सकते हैं. Now what to remember? You can set the style for several link states in a single statement. So link के जो भी styles हैं सब कुछ हम एक ही statement में डाल सकते हैं. While doing so, the following rules regarding the order in which the states are to be mentioned should be kept in mind. तो इन बातों का हमें ध्यान देना है. क्या क्या है? A hover must come after A link and A visited. Hover हमेशा visitor और link के बाद ही आना चाहिए. A active must come after hover और A active हमेशा hover के बाद आना चाहिए. सबसे पहले आएगा link, फिर आएगा visited, फिर hover and then active will come. Now we have to type the following code in HTML and observe the result. So these codes are given here. We have to type this in our notepad, and then what we will see, you can see link is here, and when we click here this will change, and when we will click here this will change the color. So here we have changed the color of the links. Now links as buttons. You can also display links as button using CSS style. So link को हम button के form में भी हम यहाँ पे create कर सकते हैं. Type the following code in HTML and observe the result. So हमने ये type किया है और जैसे ही हमने इसको open किया, so this is the result that we are going, that we are getting. So we have to type this. Now inserting images. How can we insert images? Besides text, you can display graphics, drawings, paintings, charts, maps and photographs. So text के अलावा हम क्या क्या चीजें इंसर्ट कर सकते हैं? ग्राफिक्स को इंसर्ट कर सकते हैं, ड्राइंग्स को इंसर्ट कर सकते हैं, पेंटिंग, चार्ट्स, मैप्स या फिर फोटोग्राफ्स ऑन अ वेब पेज. तो ये सारी चीजों को हम वेब पेज पे अपने डाल सकते हैं. द इमेज फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड बाय मोस्ट वेब ब्राउजर्स इंक्लूड GIF. सो ज्यादातर हम GIF फाइल्स को यूज करते हैं, मीन्स ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट को हम यूज करते हैं. JPEG फॉर्मेट को यूज करते हैं, विच मीन्स जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, एंड PNG फॉर्मेट को यूज करते हैं, विच मीन्स पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स. सो इन फॉर्मेट्स को यूज करते हैं फॉर अपलोडिंग द फोटोग्राफ्स. द IMG टेक्स्ट इज यूज टू इमेज इन द वेब पेज एंड HTML वेब पेज. सो जब भी हमें इमेज को इंसर्ट करना है तो हम ये टैग यूज करते हैं IMG. It is an empty tag that requires different attributes to be specified with it. तो ये एक empty tag है, तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ हमें कोई closing tag नहीं लिखना है और ये define करता है depends, it requires different attributes to specify करने के लिए different attributes इसे चाहिए. Now attributes of IMG text. अब image insert करने के क्या क्या attributes है, let's see. First is SRC. Here uses are given and here the examples are given. ऐसे examples हम use कर सकते हैं. So SRC is used. This attribute is used to specify the URL or the path of the image to be displayed. So ये URL को display करता है या path को display करता है जिसमें वो image display की जा रही है. And the example is rows. So यहाँ पे rows की picture हमने insert की है. Next is height or width. तो इमेज की हाइट और वेड्थ को हमें यहाँ पे डालना है. These attributes are used to specify the height and width of the image in pixel. So here we have written the height is 200 and the width is 200. Next is align. पिक्चर को कैसे अलाइन करना है, कहाँ रखना है, सेंटर में, साइड में, कहाँ रखना है. So that is done here. This attribute is used to align the image with respect to the margin in the inline text. The use left or right value to align the image with the respect of the margin. So margin से कितना रखना है, right लिखना है, रखना है, ये यहाँ से specify होता है. Use top, middle, bottom to align the image with respect to the inline text. So ये भी options हम use कर सकते हैं. It depends कौन सा option हम use करें. So यहाँ पे आप देखो कि image की height हमने रखी है 200 and width 200 है, but यहाँ पे alignment आएगा. So we are aligning it. यहाँ पे हम लिखेंगे align to left or right or middle, bottom or
the top. Next is ALT. This attribute is used to specify an alternative text that a browser will display in the image and if the image cannot be displayed. So ये जो ALT जो ऑप्शन है ये एट्रीब्यूट यूज होता है एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के रूप में कि मान लो कि अगर वो इमेज डिस्प्ले नहीं हो पा रही तो उसकी जगह एक टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा एंड यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा. Next is border. This attribute is used to specify the width of the border around the image. So image के चारों तरफ कितना border कैसा border होगा उसके लिए we use this image border and the border is 6. Now we have learned about the attributes. Now we are going to create a program and then we have to type this code in HTML and observe the result. So we have to type this in our notepad and then we are going to see the result. So we have inserted the image here and type these. Now again body is given here, text alignment is given here and then we have typed here, we have inserted the image of a modem and we have written where the modem is to be placed, height, width, all these things are specified here. So after copying all this, what happened, we can see this is the end result that we will see when we will click on the file that we have made. So this is the picture of the modem and the content is written here. Now we have to type the following code in HTML and observe the result. So again in the previous page, जो previous page हमने देखा वहाँ पे modem की picture यहाँ थी left side में. Now we have arranged it to the right side. और मॉडर्न में ये हमने ब्लैक एंड रेड दोनों यूज किया है. सो वी आर टाइपिंग दिस इन आवर नोटपैड एंड देन दिस रिजल्ट विल कम इन फ्रंट ऑफ. सो वी हैव अलाइंड टू द राइट. यू कैन सी द टेक्स्ट इज द पिक्चर इज अलाइंड टू द राइट. हियर अलाइंड टू द राइट इज written. So after this the picture will be aligned to the right. Now images as links. अब कुछ images पे क्लिक करेंगे और दूसरा एक पेज खुल जाएगा, लिंक बन जाएगा और दूसरा पेज खुल जाएगा. An image can also be used as a hyperlink to another document. So image को भी हम use कर सकते हैं as a hyperlink एक नई document को खोलने. So following type the following codes in the HTML. HTML में ये कोड हमें टाइप करना है and save the file with the name image.html. So इस नाम की फाइल हमने सेव की है. जैसे हम इस फाइल पे क्लिक करेंगे we can see the result that is in front of us. We can see the picture of keyboard, trackball, mouse, joystick and scanner are here. So here we have inserted the image here. Next, now type the following code in HTML and save the file with the name imagelink.html. अब ये जो दिए हैं इन्हें भी हमें टाइप करना है और we have to save it with imagelink.html. ये इसका फाइल नेम रखेंगे and when we type this and visit this link, what will happen? This will be in front of. So जैसे हम उस पे से किसी एक पे भी क्लिक करेंगे, उस इमेज में से किसी पे भी क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक किया ये वाली पेज हमारे सामने आ जाएगी. इसका मतलब इमेज इज एक्टिंग एज अ लिंक. तो इमेज पे क्लिक करते ही ये वाला पेज खुला, मीन्स इमेज एक लिंक की तरह वर्क कर रही है. नेक्स्ट इज फ्रेम्स इन HTML. व्हाट आर फ्रेम्स? फ्रेम्स आर अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर वेबसाइट. सो फ्रेम्स से हम अपनी वेबसाइट को और ज्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. दे एनेबल यूजर्स टू डिवाइड अ पेज इनटू नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर सेगमेंट्स. सो ये हेल्प करते हैं यूजर को पेज को रेक्टेंगुलर सेगमेंट्स में डिवाइड करने के लिए. फ्रेम्स ऑल्सो अलाउ मल्टीपल HTML documents to be presented as independent windows within one browser window. So एक browser window के within हम इसको use कर सकते हैं. How can we create frames? To create a form in HTML5, iframe tag is used. The iframe tag specifies an inline frame. An inline frame is used to embed another document within the current HTML document.
सो इसको यूज करेंगे जिससे कि हम फ्रेम को जो है इंसर्ट कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में. Now here some attributes are given, their uses, and also the syntax is given. So first one is src. This attribute is used to specify the path of the document. Document के path को बताता है. That should be displayed in the inline frame, जो inline frame के अंदर है. For example, this is the example that we can type. Next is height and weight. So height और weight कितनी होनी चाहिए? These attributes are used to control the size of inline frames. तो inline frames के जो attributes हैं उसको बताने के लिए ये specify किया जाता है. So here the syntax is given. Width is value in pixel and height is value in pixel. Now we have to type the following codes in HTML and observe the result. So here we can see this is the result. When we type this code in our notepad, this result will come in front of us. So this is the main document containing the inline frames, and here the output devices are given. Here the student details are given. So two different frames we can see. यहाँ पे हम देख सकते हैं दो अलग अलग फ्रेम है. एक में तो आउटपुट डिवाइसेस का फ्रेम है और दूसरा है जो स्टूडेंट डिटेल्स का एक फ्रेम है. So दो फ्रेम्स को यहाँ पे लिखा गया है. नेक्स्ट इज बॉर्डर इन आई फ्रेम. सो आई फ्रेम में क्या बॉर्डर होगा? इन एन इनलाइन फ्रेम कैन बी डिस्प्लेड विद बॉर्डर. सो ये जो फ्रेम हमने बनाया था इसको बॉर्डर के साथ डिस्प्ले भी किया जा सकता है. फर्स्ट we have to write down the syntax, and the syntax is border value for border and width value for border style, value for border color. So this is the syntax that we have to write, and the properties can be applied individually. हर एक में जो प्रॉपर्टी है वो एक करके ही अप्लाई होगा. बॉर्डर विड्थ वैल्यू. नेक्स्ट वेयर बॉर्डर जो है थिक हो सकता है, थिन, मीडियम, न्यूमेरिक वैल्यू, आइडेंटिकल इन पिक्चर. सो इनमें से कुछ भी ऑप्शन हो सकता है बॉर्डर विड्थ वैल्यू का. बॉर्डर स्टाइल वैल्यू में वे वैल्यू कैन बी नन, हाइट, डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट और आउटसेट. सो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज हो सकता है फॉर बॉर्डर स्टाइल वैल्यू. नेक्स्ट इज बॉर्डर कलर वैल्यू. बॉर्डर का कलर कैसे हो सकता है? द नेम ऑफ द कलर ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल कोड. सो जो भी इसका हेक्साडेसिमल कोड है उसके कलर के ही कॉरेस्पॉन्डिंग कलर वहां पे हमें शो होगा. Now here we can see we have applied the border to the output devices and the student detail. We have to type the following codes in HTML and observe the result. So ये code हमें type करना है in our notepad, and we can see this is the result. यहाँ पे हमने dotted use किया है, इसके according ये choose हुआ है, and this is according to the given student's detail. So when we type this result we are going to get. Now let's quickly come to the recall time. And hyperlink is a highlighted text or image that stores the address of some web pages, documents. Where we click or any hyperlink, the text document opens. External linking involves connecting two different web pages. When you click on hyperlink, a new web page will to which the hyperlink is linked get displayed in the browser window. Internal linking involves linking various sections of the same web page. This type of linking is useful when a web page is very long. It lets the user view the desired section of the page quickly. The anchor A tag is used to create hyperlinks in a web page. It is a container tag. Any text or image enclosed within the A or opening A or closing A tag is displayed in the hyperlink. तो जो भी चीज इसके बीच में होगी वो डिस्प्ले होगा हमारे hyperlink में. The href attribute indicates the destination of the link. It defines the document to which the link leads. Frames are the way of organizing your website. They enable users to divide a page into number of rectangular segments. So frames हम rectangular segments में अपने पेज को divide कर सकते हैं. For different purposes, frame allows multiple HTML documents to be presented as independent windows within one browser window. So children, we have completed the chapter. Now let's quickly come
to the book exercise. I'll be doing 2 questions of each exercise and the rest questions you have to do on your own. So here the first question is the dash tag is used to create hyperlink in the web page. So here a tag is used. Next, which of the following is not a link state? So इनमें से कौन सा है जो link state नहीं है? So here a hyperlink is not in the link state. There are 4 but this is not there, and the rest you have to do on your own. Now fill in the blanks. A dash is a highlighted text or image that stores the address of some web pages or document. So a hyperlink is a highlighted text or image that stores the address of some web pages or document. Now dash involves linking various sections of the same web page. So here internal linking is the correct answer. It's already written here. So you have to underline this internal linking. So internal linking involves linking various sections of the same web pages. Now let's quickly come to true and false. When we double click any hyperlink, the link documents open. So this is false, and external linking serves as a bookmark to go to a particular segment on the web page. So children, this is true. Now question and answers. How can we link web pages in HTML? So for linking the web pages in HTML, first we used to use the a tag. It is a container tag, so it has an opening and a closing tag. So a tag is used, and we also use external and internal linking for linking the web pages in the HTML. Now children, rest questions you have to do on your own. So children, by this we have completed the chapter. I hope that you understood the chapter, and you have to do whatever exercises were given in between the book. That all you have to do and see whether the same result that was given there, you will receive that result or not. जो भी आपको पिक्चर दिखाई दे रही थी वही सेम रिजल्ट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. सो उसके लिए आपको सबको नोटपैड में करना पड़ेगा टाइप, और उसके बाद उसे आपको सर्च करके देखना पड़ेगा. So by this we have come to the end of the chapter, children. I'll be waiting for you with a new video, and till then you have to stay late.